Right. Okay. Perfect. So हमारे पास दो बिल आए हैं, दोनों प्राइवेट मेंबर्स बिल है। So your voice is बिल not का clear. प्रोसीजर ये होता है, पहले बिल को टेबल करने के लिए एक मोशन आता है, उस मोशन पे वोट। होप आई एम ऑडिबल नाउ? Yes, sir. Yes. या तो कोई भी बिल आता है, पहले उस बिल को टेबल करने के लिए एक एजेंडा आता है, फिर उस बिल की फर्स्ट रीडिंग होती है। फर्स्ट रीडिंग के बाद उस पे अमेंडमेंट्स पुश करे जाते हैं। अमेंडमेंट्स पे इंडिविजुअली वोट होता है। यहाँ पे मैंने आपको पहले भी बताया था, कोई फ्रेंडली अनफ्रेंडली अमेंडमेंट नहीं होता, अमेंडमेंट होता है। अमेंडमेंट के वोट So your voice is not थर्ड clear. रीडिंग होती है बिल की, जब वो सब खत्म हो Voice तो was थर्ड clear. रीडिंग, और थर्ड रीडिंग के बाद हाँ Sir, your voice सर is आपकी breaking. वॉइस ब्रेक हो I रही है। can't understand. अध्यक्ष महोदय, आपकी आवाज
I think sir is facing some network issues. Till then, he will be back in 2 minutes, probably. So till then, you can allot portfolios. Narendra Modi, are you here? Yes, sir. There are a lot many questions that are addressed to Dr. Harshvardhan, etc. You can allot them or like talk amongst yourselves in that. Sir, can you list out the portfolios that I'm missing? Because I have taken the role of Narendra Singh Tomar. And There is no list Raghunath. as such. I think you can refer to the participants window because a lot many people are absent. Sir is here. Yeah, hello everyone. Yes. Yeah, so I believe I'm much more audible now. Yes, sir. Yes, sir. Chaliye, perfect. Yeah, considering the fact that I'm having serious network trouble right now, I have switched to my mobile phone layer. Yes, sir. Sean, we were talking about the bill is introduced. Bill table करने के लिए पहले and then we move forward to having the bills or not, है ना? हाँ या ना बताना पड़ता है मतलब अभी हम फॉर्मल सेशन चालू नहीं हुआ He was not present during the roll call. Would their vote be counted during these sessions? In this session? Certainly vote ought to be counted, right? Sorry, sir? अगर अब कोई वोटिंग के टाइम पे नहीं है तो नहीं उसका नहीं वोट सर कैसे काउंट होगा अगर कोई अटेंडेंस के टाइम पे नहीं था तो would their votes still count now? Certainly, sir. Their votes would count, right, sir? Yes. Okay, sir. Yes. All right. Any other questions? Seeing no questions, Hardeep Singh Puri sir. Yes, sir. I propose the motion to enter the zero hour. Wonderful. Thank you so much, sir. Those in favor may raise your hands now. May raise their hands now. Perfect. This motion passed. Yeah. Do you have the document, Dave? Yeah. Questions for zero hour and the farmers produce trade, right? Yeah, the questions for 0 hour document. Please share it. Yes, sir. And there you are expected to have a look at your WhatsApp too. Yes, sir. I'm calculating. All right. Can you go to the main breakout room and ask Priyanka to make me the co-host? Yes, sure. Okay, one second. That I'll do. One second. Is this fine? Yes. Right. I'll call Bianca. The parliamentary inquiry. Yes, madam.
answering via chat is allowed? मैडम अब आप करते रहिए, अब जब मैं सवाल पूछूंगा तो आई बेसिकली डिजर्व टू हियर योर आंसर, राइट? एल्स आप चिट से भेजना चाहते हैं तो भेज सकते हैं, बट द 0 hour इज बेसिकली मेंट फॉर टेकिंग आंसर्स वर्बली, राइट? Yeah. Okay. Thank you. Yeah, so we have the first question from Shri Hardeep from Dr. Shrikant Shinde. India has 26 sedimentary basins covering dash area, but only 22% of the total area falls under the category moderately to well explored. So respected minister could tell us as to why their government is still lacking in exploration of basins and what steps are taken to perform better. Hardeep Singh ji. Yes, Mr. Speaker, I'd like to answer this question by firstly stating that exploration efforts have been initiated in these parts as well. अगर आप सही से डेटा को देखेंगे तो मॉडरेटली टू वेल एक्सप्लोर्ड जो कैटेगरी है उसमें 22% है, बट इनिशिएशन ऑलमोस्ट 44% एरियाज में हो चुका है ऑलरेडी. तो बस कुछ एरियाज जो हैं ऑलमोस्ट 30% रिमेन्स पुअरली टू कंप्लीट. उसके बारे में मैं आगे बताऊंगा कि क्यों. देयर आर वेरियस कंसर्न्स, like ecological concern. Firstly, offshore drilling operations जो होते हैं वो possibly जो लाइफ होती है, aquatic life होती है, उसको affect कर सकते हैं. और they can also lead up to building up of heavy water contaminants, because obviously construction work चलेगा throughout the area and everything. And उसके बाद it can also disorient the whales, because the communication mechanism of whales, they communicate through the sea waves, and they have a different mechanism of communication. Now when you're drilling now when you're drilling and carrying on construction operation in these areas, it tends to create vibrations inside the sea, obviously, for obvious reasons, and then that can affect the aquatic life there, including whales. उसके बाद these whales rely on sonar for navigation, which is sound and navigation ranging mechanism. जो कि again I can't go into the science of it, but basically वही होता है, they communicate through sending sound signals throughout the waves and then receiving them back. All right, and it can also exacerbate the risk of oil spills. Yes sir. All right, thank you. सर एक छोटा सा पॉइंट बचा है, फिर जल्दी. हाँ सर. सेकेंडली पॉइंट ये है सर, एनर्जी ट्रिलेमा होगा. इन ऑर्डर टू build a strong basis for prosperity and competitiveness, India must balance 3 core dimensions of the energy trilemma, that is the affordability of access, energy security, and environmental sustainability. I hope that answers your question. Thank you, sir. The next question is to K. Karunanidhi. Youth were arrested by the NIA 14 hours ago. What was the Tamil Nadu government doing, and what was the state police doing? K. Karunanidhi. Hello. Yes, sir, you are audible. You are audible. हाँ तो कन्वर जी साहब दीजिए, जवाब दीजिए. Will you like to answer? All right, we move to the next question. It is again to Hardeep Puri. What's the government doing for sustainable urbanization? The government of India, sir, keep the answer very quick. Sure, sir. I will only describe what initiative the government has taken. Smart cities mission government mission for rejuvenation and urban transformation लिया है, which is अमृत. प्रधानमंत्री आवास योजना urban भी है. स्वच्छ भारत मिशन इनिशिएट किया है throughout the country. Establishment of real estate regulatory authority
in every district and city किया है. उसके बाद focus on the urban sector during the last 6 years can be guessed by the infusion of overall investment 2 lakh crore का investment किया है as compared to 1.5 lakh crore in the same Thank period you, sir. between Thank you. 2014. Shrikant, Piyush Goyal sir, the next question is to you. Are you here? Yes, sir, I am here. Answer please, and keep it short. Okay. So we have digitized Aadhaar. So sir, I'll start. हमने हमारी सरकार ने राशन कार्ड को 100% डिजिटलाइज किया है और उसको आधार से कनेक्ट किया है. हम के मात्र 2016 से 2018 के बीच में ही 1.5 करोड़ नकली और डुप्लीकेट बोगस राशन कार्ड डिलीट किए गए हैं. और तो और हमने इसका पता लगाया है कि केवल मात्र इसके लिए हमारे यूनियन गवर्नमेंट ने 5.2% of its budget, that is a huge amount for PDS has been allotted for this system. Thank you, sir. All right. Start. So to answer, our government is setting up a club model of residential school under the Ministry of Tribal Affairs. As per the budget of 2018-19, every block with more than 50% of ST population and at least of 20,000 tribal person will have this Eklavya model of residential school. This is being set up under the Article 275 subclause 1 of the Indian Constitution. There will be an autonomous society under the Ministry of Tribal Affairs, similar to that of the Navodaya Vidyalaya Samiti. The objective of these EMRS is to provide quality and high-level education to SC students, and this will also impact the scheduled tribes. Apart from building schools, hostels, and staff playgrounds, computer labs, teacher resource rooms, also including this scheme, this initiative will also benefit the SC students immensely. All right, thank you, sir. Dave, can you please scroll the screen up? Yes, sir. Yeah. Dharmendra Pradhan sir, will you like to answer this question? So could you repeat? I couldn't hear what you last said. Will you like to answer the question on screen that is addressed to you? Yes, sir. Dharmendra Pradhan ji is not in the meeting. Rajnath Singh. Sir, we are skipping this question in that scenario. Sir, I can ask this question. Sir, I can take this question. No, sir. Not allowed. We are moving next to Piyush Goyal sir. Will you like to answer this question? Yes, sir. Ma'am, go ahead, please. India usually imports products like nuclear reactors, machinery, and mechanical appliances at the same point. Even in the whole country, due to recession of the world trade, India's import has been declined, as well as India's export has been also declined. You will be astonished to know that हमारे देश में क्यों ये हुआ है क्योंकि headwind of the dollars. एक मिनट network issue. Yes, India was facing headwinds of dollar control, capital flow, while the central bank was making all efforts to address currency volatility. The slowdown in the world's down economy is dampening exports. Even WTO has also said that our recession in developed world is reducing demand for global goods exports, and because of high dependence of India on oil imports, Thank you so much, led to trade deficit. Thank you, sir. Thank you, ma'am. Dharmendra Pradhan is again not here. Dev, can you please scroll the screen further up? Yeah, Mahua Maitra, will you like to answer this question? Yes, sir, I would like to answer this. Go ahead and keep it crisp, please. As you are aware of our continued efforts that are both
truth, and the price ceiling of the raw jute was withdrawn by the Jute Commissioner with effect from 20th May 2022. The new capital subsidy acquisition plant and machinery scheme that Union Minister of Textile has introduced during the period of Mawa, from which, 20. which question are you answering? Just a minute. All right, your jute I one am is so fine. sorry. Answer the ninth question first. Okay, yeah, sorry. Yeah. We are not playing with the people's money, and the minister's name, when it came, we did not color it politically. When we found out that the minister was, when the ED came up and the charge sheet was filed, the minister was suspended from the party and the ministry cabinet. So we're not playing with the people's money, and we understand that this is a big issue. Thank you, It ma'am. is not. Hardeep Singh Puri Sahab, will you like to answer the question? Yeah, kindly go ahead and keep it very crisp, okay? Yes. Yes. सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा, इस स्कीम में कोई गिव अवे नहीं है, बस एक इजी सॉफ्ट लोन की स्कीम है जो कि हेक्टिक पेपर वर्क से बचाकर वेंडर्स को लोन प्रोवाइड करेगा. Vendors can still avail working capital loan of up to 10,000, which is repayable monthly. One time early repayment of the beneficiaries through direct benefit transfer, and there will be no penalty on early repayment of loans. This is because the lockdown has affected lives and livelihoods of many people, especially daily wagers. Street vendors usually work with small capital base. उनके लिए ये है. Further, they might have consumed their savings and higher. Thank you so सर, much, तो मैं sir. आंसर करना चाहूंगी, और मैं यही कहना चाहूंगी कि इन जून 2014 एक चिटले कमेटी की रिपोर्ट आई थी जो असेंबली ने टेबल करी थी, और उन्होंने क्लीन चिट दिया था अजित पवार को, जिस केस की बात हो रही है यहाँ पर. तो सबसे पहली बात तो ये है कि आप श्योर रहिए कि हो क्या रहा है या नहीं हो रहा है. और उसके बाद जहां तक बात रही प्रॉपर्टी डील्स की, तो वहां पर एक सिंगल पैसे की भी ट्रांजैक्शन नहीं हुई है, और ये गवर्नमेंट का जॉब है कि वो ये बताते कि सामने वाला पोटेंशियली हार्मफुल है. थैंक यू. All right, one, thank you. I believe Dave has been disconnected for some reason. Sir, is my screen visible? Right. Yes, it is. Yeah, so, all right. Dharmendra Pradhan is again not here. Kindly scroll further up. Narendra Modi ji, answer this question, please. Yes, sir. I'm audible. Yes, you are. Go ahead. Yes, sir. So the RBI had issued master's directions on frauds in 2016, and the government has instituted wide-ranging structural and procedural reforms to check frauds in banks, including legacy stocks and non-performing assets, which has led to a rise in unearthing of legacy stocks, which led to a rise in the total tally of commercial frauds. However, the occurrence of such frauds went down from 61,229 crores in financial year 2016-17 to 11,583 crore in financial year 2020-2021. Furthermore, comprehensive steps taken by Supriya ji, do you have any follow-up? सर, ये जो फ्रॉड है इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं हुआ है. ये अभी तक उस पे आ रहा हूं मैं. Thank you, sir. जल्दी आंसर करिए. Furthermore, the RBI has introduced strict measures such as online searchable database of frauds reported by banks in the form of central fraud registry, master's directions which require banks to report frauds beyond the threshold amount to police, monitoring, follow-up of cases by special committees, fraud management of fraud risk and early detection of loan frauds, prompt reporting to RBI and investigation agencies, and reforms to Swift messaging system and enabling time-based exceptions to Swift. Thank you, sir. Rahul Gandhi ji, would you like to answer this question? Rahul Gandhi, would you like to answer this? Yes, go ahead, please. So, if
Mr. Modi had gone ahead and seen our entire manifesto, he would have realized that while we believed that farmers should be allowed to pursue free trade and interstate trade, we also made sure that we were going to build cold chain supplies and other supply chains so that small farmers could avail this and provide enough infrastructural support. Besides, we also wanted to ensure an established amount of MSP on a varied number of products, even in the free market, so that the farmers were not going to be left in a very vulnerable position as they were through the farm laws that were brought in. Thank you. Thank you, Madam Narendra Puri. Will you like to answer the next question? Yes, sir. Just a second. Ramesh, would you like to cater to the next question? Sir, I cannot hear you. Go ahead. I'm asking, can you please cater to the next question that is asked from Mahua Moitra to you? Yes, sir. The Department of Consumer Affairs monitors the daily retail and wholesale prices of 22 essential food commodities submitted by 179 price monitoring centers that have been set up with central assistance by state governments and UT administrations across the country. The government takes various measures from time to time to augment domestic availability and stabilize prices of essential food commodities, such as releasing buffer to cool down prices, position of stock limits, monitoring of stocks. In May 2021, advisories were issued to state UTs to monitor prices of essential food commodities to ensure disclosure of pulses stock held by millers, importers, traders under Essential Commodities Act 1955. To improve availability of stabilized prices of pulses, the government has allowed import of tur, urad, moong under free category, where from 15 May 2021 till 31st, which it ended on 31st October 2021. In order to stabilize retail prices of onions, a buffer stock of 2 lakh metric ton has been built in 2021 to 2022 to open market releases of onion from buffer, which were targeted towards cities, states where prices were increasing over the previous months. Thank you, sir. Arjun Mandasa, will you like to take the next question? Yes, sir. So answer is the Ministry of Tribal Affairs, working together with the Ministry of Home Affairs, issued guidelines aiming to relax the provisions of lockdown for collecting, harvest and processing of minor forest produce by STs and other forest owners. Ministry of Tribal Affairs also revised the minimum support price for the minor forest produce, offering much needed support to the tribal gatherers. And in order to have the updated data on health infrastructure and power, across the portal where data from MOHF&W and MOWCD and from these districts will be captured. Thank you. All right, sir. Narendra Singh Tomar is not here. We move on to the next. So I took the apologies for you took the portfolio, but then leave it for a while. Rahul Gandhi from Bhupendra. Rahul Gandhi ji, answer this question, please. Question number 19. Just a second. So the government of Rajasthan has decided to give the family of each deceased ₹5 lakhs under Chiranjeevi Accident Insurance Scheme, and the survivors of the accidents have been given up to 20,000 rupees from Chief Minister's Relief Fund. Besides this, the state has advised, has given alerts according to the meteorological department and has advised everybody to stay indoors and in safe places. And state disaster response fund has also been put on high alert to ensure that minimum casualty can be ensured. Perfect, thank you. Hardeep Singh Puri sahab, answer this question. यार एक मिनट रुको, ये क्या सवाल पूछ रहे हो यार? Scroll up. Hello, sir. Scroll up.
Sir, point of parliamentary inquiry. Yes, sir. Sir, why was that question ignored? Sir, that question was ignored for the sole reasons कि neither it is associated randomly to an agenda nor it can be debated. Okay. मतलब Thank you. आप Sir, you इतने are not audible. आंसर्स में Yes, केवल sir, दो your voice is सवाल ऐसे lagging. आए जिस पे डिबेट हो सकती है. तो हेलो 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 सर हेलो, am आपकी I आवाज audible now? क्रैक हो रही है बीच बीच में. Am I audible now? हाँ सर. See, the point Yes, is, sir. इसमें जो आपने सवाल डाल रखे हैं वो सवाल एक तो बेहद रैंडम है और रैंडम के साथ उसका सीधा साधा एक वर्ड का आंसर है, तो उस पर कोई डिबेट हो नहीं सकती. Why has the prices gone down? वो 2 पॉइंट बताएगा, उसके बाद क्या डिबेट करोगे तुम? मतलब एमपीज का पेपर थोड़ी लगता है. There ought to be something that you derive out of their answer which can be debated, right? Yes, sir. ये कोई ऑब्जेक्टिव पेपर थोड़ी देना है उनको. Yes, scroll up please. Sir, I can tell something. हाँ बोलिए. सर मेरा नेटवर्क चला गया था तो सर मैं अभी जस्ट वापस रीजॉइन हुआ. And why is that an important piece of information for me? No, I was just telling कि आपको लगेगा किधर मैं क्योंकि मेरा एक आंसर अच्छा, मैंने मुझे किधर भी नहीं लगा. चलिए स्क्रॉल अप प्लीज. क्योंकि मैंने एक महा मोत्रा सा क्वेश्चन पूछा था तो चला गया ना ऊपर इसके लिए. हाँ वो तो महुआ मोइत्रा ने आंसर कर दिया होगा, उसमें आपको कुछ नहीं बोलना था. दी नरेंद्र यस मैडम. सर मेरा भी नेटवर्क इशू हो गया था तो मैं क्वेश्चन का आंसर नहीं दे रही मैडम थी जो मुझे अब जो गया वो गया, बार बार ये नहीं कर सकते. वी आर ऑन पेज 4, वी आर हैविंग लाइक कितने 10 पेजेस है ना. तो सर आफ्टर ऑल क्वेश्चंस कैन आई गिव द मैडम आंसर? we will see to it depending upon how much time we have. ये ऊपर लीजिए, स्क्रॉल करिए. स्क्रॉल करिए. Scroll up. Why was the mandate imposed? Yeah, Piyush Goyal वाला रुक जाइए बस stop. Scroll a bit down. Yeah, Piyush Goyal sir, kindly answer this question from Shrikant Sharma. Okay, sir. So in year 2020, there was an inevitable एक बीमारी आई थी जिसका नाम था कोविड. और हमने चाइना से स्पेशली 2020 में हमने मेडिकल सप्लाईज का प्रोडक्ट एक्सपोर्ट से इंपोर्ट किया था. हमने उनको एक्सपोर्ट में स्टील और आयरन दिया था, बट उसके बदले हमने मेडिकल सप्लाईज, बॉयलर्स, न्यूक्लियर रिएक्टर्स दिया था. और उसमें भी हमें हमारे जो इंपोर्ट्स थे उसमें 11% की घटोतरी थी और हमारे स्टील और आयरन के एक्सपोर्ट में 319.14% की बढ़ोतरी थी. इसे हम कह सकते हैं कि मेक इन इंडिया, वोकल फॉर लोकल और आत्मनिर्भर भारत का जो स्कीम है वो एक प्रॉपर रूप से फंक्शन कर रही है. थैंक यू सर. Yeah, all right, okay. Next question, what are this? Yeah, Narendra Modi answered this question from Shrikant Shinde. जी सर. So the COVID-19 pandemic that year, which provided unfortunate impetus to the growth of suicides. However, Shri Eknath Shinde ji should also realize that Maharashtra continues to be at the top of the list with 4,006 farmer suicides out of the entire figure of 10,000. I would also like to remind the committee that there has been steady decline
since 2016, when there were 11,379 suicides total, to 10,655 in 2017, 10,349 in 2018, and 10,281 in 2019. The spike can be attributed to the COVID-19 pandemic, and maybe Eknath Shinde ji should ask Supriya Sule ji what her government was doing when 4,000 deaths were occurring in Maharashtra. Yeah, all right, thank you, sir. Rahul Gandhi ji, answer this question, please. Right. So when the incident took place, the Rajasthan police took immediate action and the two accused were arrested. Further, the case was transferred to the NIA, which it currently is under, and the due process of law and order is being maintained. Besides, we're not like your party, where lynch accused को front row में बिठा के facilitate करते हैं, माला बनाई जाती है वहाँ पे. Thank you so much, ma'am. Sir, can I counter question? Yes, sir. करो. Yeah, sir. Counter question from me, Rahul Gandhi, is that आपकी गवर्नमेंट ने किया, लेकिन जब वो जिसने मारा उसको, जिसने जो मर गया, उसने पहले से प्रोटेक्शन मांगी थी, तो उसको प्रोटेक्शन क्यों नहीं दी गई? वो पुलिस डिसाइड करती है when there's substantial evidence. Sometimes yes, there is a missed opportunity, which is very sad. However, that is up to the police's discretion on when there is substantial evidence to show that there was threat in fact. Okay, thank you, sir. Thank you. हाँ, भूपेंद्र यादव, सुप्रिया सुले, lack of teachers now, Moitra, and I can't scroll further up. West Bengal did not see it as during the past 40 years. No, what shows the state government of West Bengal doing? Yeah, Mahua Moitra, kindly answer this question from Bhupendra Yadav. So the question number 31, right? Yes. First of all, Chief Minister is not involved, and the ED is still taking, like, the course is entirely going on. We have suspended the ministers who are involved in it. I've stated this multiple times that we are not coloring a person in a political party views, but rather we have stated that the person is equal on every single way. It doesn't matter if that person is from a ministry. We believe that if a person is once charged, we will wait for the course outcome, and if the person is charged, he is already suspended. The party has given its punishment to the minister. All right, thank you, madam. Let's move further up. Scroll down, please, एक बार. नहीं देर, अरे सर, मतलब ऊपर लेके जाइए 33rd या 34th क्वेश्चन. ऑनरेबल स्पीकर सर, हाँ, मैं कुछ बोल सकता हूँ? आप फरमाइए. सर, मेरा एक क्वेश्चन था 28 नंबर पे. हाँ, उसका आंसर मुझे देना था, लेकिन कुछ बोला नहीं गया कि क्वेश्चन का आंसर देना है कि हाँ, नहीं. हाँ, क्योंकि वो सवाल अच्छा नहीं था, इसलिए उसे स्किप करते हैं. ओके सर. Mahua Moitra, answer this question from Narendra Modi. Question number 33, right, sir? Yes. So system is made up by the people and not the other way around. So if just because one person has been committed some crime which has still to be proved, and the person has yet to be charged, innocent till guilty, proved guilty, I believe that
placing a certain person on such a weighing scale कि वो गलत है, हर चीज गलत है, पूरी सिस्टम खराब हो गई या पूरी पार्टी खराब है, this is very wrong. That the minister Parth Chatterjee was suspended. I have stated this again and again. He was suspended from the party and the ministry cabinet, and we are working that so that further such issues do not crop up. Thank you. ए राजा नहीं, नॉट अलाउड. ए राजा साहब गिरिराज सिंह जी के सवाल का आंसर दीजिए. 35th क्वेश्चन. Yes, sir. So I would like to say that I believe in integrity of our country, and so my intention was not that the opposition is saying, so that the ruling member is saying. So it has been misunderstood by him. Do you have any counter? Sir, misunderstatement तो ये है नहीं. You are talking about separating an entire state from India, which is clear-cut violation of the integrity. So, फिर आपके arguments do not make sense over here. No. See, I was I meant something else, and this you have misunderstood. हाँ जी, कौन किसको याद आई बीच में मेरी? सर मैं भूपेंद्र यादव. हाँ जी बताएं. सर ए राजा जी को और उनकी पार्टी को सदन से माफी मांगनी चाहिए और साथ साथ देश से भी माफी मांगनी चाहिए पत्र लिख के. बिल्कुल माफी मांगेंगे, लेकिन आपने गलत समझा है ना, इसीलिए अगर गलत होगा तो आप सांसद होकर देश तोड़ने का बात कर रहे हो. इससे ज्यादा शर्म की बात और कुछ नहीं हो सकती सर. नहीं, देखिए आपने गलत समझा है. हमने भूपेंद्र यादव जी एग्जैक्टली ऐसे आपकी मानसिकता ही वही है, तो आप वही समझेंगे. सर आपको माफी मांगनी चाहिए सदन में और साथ साथ देश से भी माफी मांगनी चाहिए. देखिए माफी मांगने के लिए कोई शर्म नहीं है, बट आपने गलत ये समझा है ना. All right, thank you so much, people. क्या can we move further up, please? To Mitra, अरे अर्पिता मुखर्जी, हाँ ठीक है, ऊपर बढ़ो और बढ़िया. गिरिराज सिंह. Sir, the 34 question was not relevant, क्या? This was asked to me. सर मैं एक काम करता हूँ ना, एक पर्सनल उस पे चैट पे ले लेता हूँ आपको. I'll keep on answering everything for you, right? मतलब हाँ, it wasn't relevant. That's the sole reason. कुछ सवाल ऐसे जो पहले आंसर हो चुके, कुछ सवाल ऐसे जिसपे केवल फैक्ट्स और फैक्ट्स पूछे जाने हैं. तो भाई साहब वो तो देख लो ना, लोकसभा की वेबसाइट पे पढ़े होंगे आंसर्स में, राइट? डिबेट किस चीज पे करोगे? Understood, sir. Yeah, Rahul Gandhi, kindly answer this question 38 from Giriraj Singh. Will you like to answer, sir? Yes, sir. Go ahead. So, yes, the agriculture is in fact the backbone for my constituency, and my constituency has been severely affected by the consequences of climate change and land encroachment, where hills and forests have been chopped down. Further, there's a major debt crisis in my constituency, and the legally binding minimum support prices have not been met, and the crop insurance that was promised by the government has not been received by a lot of farmers, which has led to an increase in their plight and suicide. Right, thank you so much. But can I follow up? No, sir. Sure. Yeah, Supriya Sule sahab, kindly answer this question from Hardeep Singh Puri. So in order to accelerate the completion of irrigation projects in Maharashtra state, the government has already established 5 irrigation development corporations
and those are Maharashtra Krishna Valley Development, Vidarbha Irrigation Development Corporation, and 3 more which work for the same purpose. And it has to be noted that enough provisions and several schemes are being made and performed. It is something that is being taken place climatically, that we are prone to such situations, but then the government has taken enough stances in providing our farmers with enough irrigation facilities. Sir, am I allowed to ask a follow-up question, sir? No, sir. Kindly scroll up, please. Sir, I want to add a हाँ जी बोल Sir, here like when we are in 0 hours, khichdi and this. Khichdi is a parliamentary word. It is the best thing that the Prime Minister likes. So it is expected that you respect khichdi. Yeah, I was just asking, sir, for my general information. Thank you. No, khichdi is a very parliamentary word. Yeah. Scroll up. हाँ, पीयूष गोयल साहब वाला क्वेश्चन फारूक अब्दुल्ला साहब ने जो पूछा है, क्वेश्चन नंबर 43. पीयूष गोयल साहब, would you like to answer? Yes, I'd like to answer. Yes. गवर्नमेंट ने केवल सीनियर सिटीजन्स के रेल टिकट फेयर्स को कम नहीं किया है, उसके अलावा वो अभी भी 3 कैटेगरी प्रोवाइड करती है, जिसमें वो 4 कैटेगरी दिव्यांगजन को 11 कैटेगरीज ऑफ 11 कैटेगरी मरीजों को और स्टूडेंट्स को देती है, जिसमें वो अपने रेल टिकट के किराए को कम कर सकते हैं। हमने वृद्ध लोगों के लिए टिकट्स क्यों कम की? क्योंकि हम उन्हें ऑलरेडी ही सब्सिडीज दे रहे हैं। हम केवल 100 रुपए ही कलेक्ट करते हैं, उसमें से भी वो ऑलरेडी अपने आप में सब्सिडीज है, और अगर हम उन्हें और सब्सिडीज देते हैं तो हमारे गवर्नमेंट को बहुत ही नुकसान होता है। और हमने बहुत सोच समझ कर ये निर्णय लिया है कि हम इस नियम को वापस नहीं लेंगे। ये इस वृद्ध नागरिकों के लिए टिकट फेयर कम नहीं होगा। Any counter question, फारूक अब्दुल्ला साहब? यस सर सर, मैम कह रही हैं कि 3-4 तरह के सेक्शन के लोगों को अभी भी दिया जा रहा है, उसमें दिव्यांगजन का भी इन्होंने नाम लिया। मैम इसमें मैंने लिखा है ओल्ड पीपल्स विच आर मोर देन और एट द एज ऑफ 60। मैम उनको तो उनके तो रेल टिकट पे आपने सब्सिडीज हटा दी। पहले स्टार्टिंग से चलता आ रहा था, अचानक से आप लोग आते हैं सरकार में, दूसरी बार आते हैं और रेल टिकट हटा देते हैं। क्यों ऐसा? इसका जवाब देना था आपको, ना कि दिव्यांगजनों को दे दिया, किसको दे दिया। मैम ओल्ड पीपल्स की बात। Thank you so much, sir. Thank you so much. पीयूष गोयल साहब, आंसर प्लीज। यस सर, क्योंकि हम वृद्ध लोगों को ऑलरेडी सब्सिडीज प्रोवाइड करते हैं। वो वृद्धा पेंशन योजना है, फिर राशन योजना है, उस बहुत सारे ऐसे स्कीम्स चलाए जाते हैं जिनसे उन्हें लाभ पहुंचे। उसके अलावा टिकट की बात की थी, मेंशन किया था पर्टिकुलर रेलवे टिकट्स। सर, हम उन्हें ऑलरेडी स्पेशल सुविधा ट्रेन में ही देते हैं। उनकी टिकट्स पहले ही बुक होती हैं। सबसे पहले अगर आपने देखा होगा कि आप कोई टिकट बुक कराते हैं तो हमारे लिए उनके लिए अलग होता है, सो दैट वो अपने बर्थ को अपने प्रेफरेबल बर्थ को चूज कर सके। All right, thank you, sir. Thank you, madam. Can you move further up, please? Sir, there is a contention raised by Shri Bhupendra Yadav in the chat box. सर, वो ये कह रहे हैं 42वें नंबर का जो क्वेश्चन है वो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर को एड्रेस होना चाहिए। अब ना सवाल मैंने लिखा है ना जवाब मुझे देना, तो मेरी तरफ से क्वेश्चन डिस्कार्ड हो गया। आई एम मूविंग अप। ओके, चलेगा सर। Honorable Speaker, sir. हाँ। Can I answer question number 42? No, not required. Question number 46 to Rajnath Singh. Rajnath Singh sir, kindly answer this question. Sir. So of course our government is always there to protect the Indian border, and for that we are always protecting the integral parts of the country. The Defense Ministry has already acquired 14.128 acres of strategic land along the LOC, and
just a few months ago, we had a tussle with the Chinese PLA on the LSE, after which we gave our best to protect our LSE. And with that, we are always trying to protect the border areas of our country, especially Arunachal. And with that, we haven't ever compromised on the territorial integrity of Arunachal or any other Farooq border Abdullah states of our sahab, any country. at all. counter will you like to have? यस सर, यस सर. सर इन्होंने एक सुटेबल आंकड़ा दे दिया यहाँ पे कि इतना इन्होंने ऑप्ट कर लिया. तो सर हम यहाँ पूछ रहे हैं आपसे, जो बचा हुआ इंटीग्रल पार्ट जो इंडिया का है अरुणाचल प्रदेश में, उसमें तो चाइनीज वहाँ खड़े हैं, वहाँ अपना झंडा तंबू सब गाड़ के बैठे हैं, वहाँ घर बसा रहे हैं, वहाँ अब पता है आपको दुकानें लगने स्टार्ट हो गई है सर. तो वो कब आप ले रहे हैं, अदर देन पीओके और जम्मू के इशू को रेज करने के बाद? आपके पास समय है? थैंक यू. हाँ सर, एलएसी तो एक इश्यू है. तो एलएसी में जो भी हो रहा है, अब ऑलरेडी हम चाइना के साथ डिस्कस कर रहे हैं. जस्ट कुछ दिन पहले 17 कोर कमांडर टॉक्स हो गए थे. सो एवरीथिंग विल बी सॉल्व ओवर टाइम. सो उसकी कोई चिंता की जरूरत नहीं है. ऑलराइट, ओके, ठीक है. हाँ जी, स्क्रॉल अप, स्क्रॉल अप, स्क्रॉल अप. सुप्रिया सूले साहब आंसर करिए राजनाथ सिंह साहब का क्वेश्चन 49. Sir, I've always been a person who has focused on gender equality, and I've also presented bills like same-sex marriage and spoke in the favor of the amendment that was processed in the Prohibition of Child Marriage Bill. Pune Police has filed FIRs regarding the reports that were submitted, and urgent actions of stopping these are taking place as soon as possible, sir. ऑलराइट, थैंक यू मैडम. राजनाथ सिंह जी, कुछ काउंटर है आपके पास? No follow-up questions. Wonderful. मेरा क्वेश्चन ऊपर रह गया. हाँ, तो वो मैंने चला के स्किप करा, उससे क्या होता है? अच्छा, तुम्हारा बहुतों का रह रहा है. अरे स्क्रॉल डाउन प्लीज, 53rd क्वेश्चन पे आइए. हाँ जी, 53rd क्वेश्चन. ये राजा साहब आंसर करिए. सर म्यूट हैं आप, म्यूट हैं. यस सर. सो हमारे यहाँ जो मिड डे मील स्कीम चलती है, और हमने पता किया है कि ऐसा हुआ है, और इसके जो हेड टीचर्स है वहाँ के, उन्होंने भी इन्फॉर्म किया है कि कुछ बच्चों को हॉस्पिटलाइज किया गया था, बट उनमें सब माइल्ड प्रॉब्लम्स ही हैं जिनको रिकवर कर लिया गया है. सबको कोई ऐसे मेजर प्रॉब्लम्स नहीं आए उन बच्चों को. और हमने इन्वेस्टिगेशन के लिए ऑर्डर किया है, और उसके रिपोर्ट्स भी आने वाली है. बेसिकली ये जो ऑर्गेनाइजेशन है जो फूड डिलीवर करती है इन सब स्कूल में, वो काफी ज्यादा ऑलमोस्ट 300 स्कूल्स से ज्यादा को हैंडल करती है. तो इसमें पहली बार प्रॉब्लम आया है. वी विल गो ऑन टू द रूट्स ऑफ दिस प्रॉब्लम एंड सॉल्व, एंड whomsoever is the guilty one. ऑलराइट, नरेंद्र मोदी साहब 54th क्वेश्चन आंसर करिए. यस सर. सर मैं कहना चाहूंगा इनकी इंफॉर्मेशन गलत है, क्योंकि रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन फॉर जूनियर कमीशन ऑफिसर रिलीजियस टीचर आरआरटी कोर्सेज 85 एंड 86 के तहत पॉइंट नंबर 3 एलिजिबिलिटी में सब पॉइंट डी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में फर्स्ट पॉइंट ही लिखा है पंडित हिंदू कैंडिडेट विद माध्यम इन संस्कृत और भूषण इन हिंदी और इक्विवेलेंट स्टैंडर्ड इन द रीजनल लैंग्वेज कंसर्न. इसमें साफ साफ लिखा है recognized universities और मीडियम विद संस्कृत मीडियम आर अलाउड. सर नीचे जाके पॉइंट नंबर 5 पे भी लिखा है मौलवी में मुस्लिम कैंडिडेट्स विद मौलवी अलीम इन अरबिक
अदिब अलीम इन उर्दू और इक्विवेलेंट स्टैंडर्ड इन रीजनल लैंग्वेज कंसर्न्ड है। सर ये सिंपल सी बात है, अगर आप रिलीजियस टीचर बन रहे हैं तो आपको संस्कृत आनी चाहिए। क्यों? क्योंकि आप अपने ग्रंथ पढ़ पाएंगे। और अगर आप मौलवी बन रहे हैं तो आपको उर्दू अरबिक आनी चाहिए कि आप अपने कुरान शरीफ पढ़ पाए। सर ये बेबुनियाद आरोप है जिनका कोई एनी काउंटर क्वेश्चन? यस सर, ये जो संस्कृत यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, इन लोग ने पूरा प्रेपरेशन, पूरा फिजिकल स्क्रीनिंग और सब कुछ हो गया था। बस फाइनल मोमेंट पे जब उनका एडमिट कार्ड आया, मतलब एग्जाम देने का, तभी उन लोग को मना कर दिया गया, जबकि वो एडमिट मतलब क्राइटेरिया के अंडर ही आते हैं। उन्होंने कर्मकांड में पूरा डिप्लोमा किया। सर आंसर करेंगे साहब आप? सर सरकार के पास ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। हमने साफ मेंशन किया संस्कृत यूनिवर्सिटीज एंड संस्कृत माध्यम के स्टूडेंट्स अलाउड है। मोदी साहब आंसर क्वेश्चन नंबर 56। यस सर। सर सिंस सलमान नदवी जो पहले आप बोल रहे हैं कि एलिजेंस सी आईसिस से, एक बात बताइए, जो हमारे देश की सिक्योरिटी है, अगर आपको पता करना होगा कि टेररिस्ट कैसे काम करता है तो आप पूछेंगे किससे? नॉर्मल इंसान से पूछेंगे या जिसकी एक्स एलिजेंस होगी उसी से पूछेंगे? सर ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के तहत हम आपको सारी इंफॉर्मेशन डाइवर्ज नहीं कर सकते बिकॉज इट इज अ मैटर ऑफ नेशनल सीक्रेट्स। बट हम सिर्फ इतना बता सकते हैं कि अगर एनएसए अजीत डोवाल को सलमान नदवी से मिले हैं तो उसका कोई स्पेसिफिक रीजन है जो कि नेशनल सिक्योरिटी के हित में ही है। फर्दर मोर, सलमान नदवी इज नॉट any linked to any terror organizations currently and is also calling for a ban on PFI, the very disputed organization working in the country right now. सर मतलब नरेंद्र मोदी जी की इंफॉर्मेशन गलत है, क्योंकि अजीत डोभाल ने जब स्टेज शेयर किया था सलमान नदवी के साथ, वो एक ऐसा मतलब कम्युनिटी वेलफेयर जैसा स्टेज था, ना कि कोई सेपरेट टॉक्स। Thank you so much, sir. All right. Sir, will that point be recognized or? Yes, that will be considered. Yes, sir. Sir, point is, हम जैसे आपको बता रहे हैं, हम देश हित की सारी बातें आपको संसद में डाइवर्ज नहीं कर सकते बिकॉज ये बहुत सीरियस मैटर ऑफ नेशनल सिक्योरिटी है। हाँ जी, थैंक यू। और ऊपर स्क्रॉल करिए। ये राजा साहब नरेंद्र मोदी साहब का सवाल आंसर करिए। 59। यस सर। सो जो हमारे मिस्टर अपू हैं, उन्होंने इस चीजों को एक्सप्लेन किया है मीडिया के सामने, और उन्होंने कहा है कि वो जब एक पब्लिक गैदरिंग में गए थे तो तब उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था। और बेसिकली वहाँ पे कैथलिक क्रिश्चियन कम्युनिटी ज्यादा थी, तो इसीलिए उन्होंने मिस वर्ड करते हुए बिहार का नाम ले लिया था। उन्होंने गलत किया और उन्होंने ये माना भी था। और इसको जो रूलिंग मेंबर्स है सेंट्रल के, वो बढ़ा चढ़ा के बताना चाहते हैं, इसलिए। और बेसिकली ये पहली बार नहीं देखा गया कि आप किसी भी पब्लिक गैदरिंग में जहाँ पे एक स्पेसिफिक कम्युनिटी मोदी साहब कोई काउंटर क्वेश्चन आएगा? मोदी साहब खुद भी ऐसा ही करते हैं। जब वो किसी भी एक पब्लिक गैदरिंग में जाते हैं तो वहाँ की कम्युनिटी के लिए बात करते वक्त हो जाता है ऐसा कभी-कभी। मोदी साहब एनी काउंटर? सर ये तो आपने बहुत कन्वीनियंटली बोल दिया कि उन्होंने गलती से बोल दिया था। सर हमें भी थोड़ा बहुत हमारे तमिल भाइयों का वो ख्याल है, ऐसा सब कोई नहीं करता और ना ही हम ऐसा खुद करते हैं कुछ। सर आप ऐसे कैसे देश तोड़ने की बातें कर सकते हैं? सर ऊपर ही आपके पास एक क्वेश्चन आया था तमिलनाडु का, उसके बाद आप ये तो सर आप देश के एमपी हो कि किसी दूसरे देश पे किसी दूसरे स्टेट पे डेरोगेटरी रिमार्क्स कैसे कर सकते हैं? क्या आप मानते हैं कि तमिलनाडु बहुत बढ़िया और बिहार बहुत खराब है और वहां के बिहारी लोगों में कोई परेशानी है, कोई वोट वो ढंग से नहीं डालते? डू यू नॉट ट्रस्ट द वोटिंग इंटेग्रिटी ऑफ द पीपल ऑफ बिहार? I believe in integrity of this country, but देखें, आप जब बिहार की बात करते हैं तो एक जनरल परसेप्शन होता है लोगों का कि वो किसी स्पेसिफिक इश्यूज के बारे में पॉइंट आउट करना चाह रहे होते हैं। सर वो जेनेरिक परसेप्शन क्यों होता है? तो अरे वो है ऐसा। तो आज आप देखें तमिलनाडु इज ग्रोइंग बेटर एज कंपेयर्ड टू अदर स्टेट्स। तो वो उनका वो मतलब नहीं था कि वो बिहार को डिफेम करें, बट
as a speaker of the state, it is his duty to make sure कोई भी जो भी stereotype आए वो बाकी लोगों पे ना लगे। आपकी पार्टी इसके ऊपर क्या कर रही है, क्या एक्शन लिया है आपने स्टेट स्पीकर के ऊपर? देखिए ह्यूमंस है तो थोड़ा मिस वर्ड या मिस ये हो सकता है, इसीलिए उन्होंने अपने वर्ड्स वापस लिए। सर ये तो आप साफ गलती से पलड़ा झाड़ रहे हैं और साफ उनको क्लीन चिट दे रहे हैं, फिर आप सरकार को कैसे क्वेश्चन कर सकते हैं? नहीं देखिए एक्शन लेते हैं, बट उन्होंने अध्यक्ष महोदय, हाँ जी सर मैं अपनी पार्टी की तरफ से विरोध दर्ज कराना चाहता हूँ कि ए राजा साहब के जितने भी अभी तक स्टेटमेंट्स आए हैं और साथ में तमिलनाडु वाले स्टेटमेंट है उनको सदन की कार्रवाई से हटा दिया जाए। सर ये देश तोड़ने की बात हो रही है सर, और इनको संसद से अभी के अभी निलंबित किया जाए सर। देश तोड़ने की बात हो रही है, शपथ का उल्लंघन हुआ है। सर इनके स्टेटमेंट थोड़ी है, ये तो बेचारे बाकियों में जवाब दे रहे हैं सर। हाँ सर इनके स्टेटमेंट ही माने जाएंगे क्योंकि ये उसी राज्य की पार्टी से आते और वही राज्य की पार्टी वहाँ पे सरकार चला रही है सर। वो मैं आपकी बात से सहमत हूँ सर, बट वो है ना पार्टी का दोष भी इन पे नहीं मढ़ा जा सकता ना, वो उसके लिए मैं माफी चाहूंगा। बट हाँ आपकी बात सही है, आपका और उन्होंने माफी मांगी थी इस बात की। ऑल राइट चलिए इसको ऑल अप सर इनके स्टेटमेंट को सदन की कार्रवाई से हटा दिया जाए सर। नहीं हटाया जाएगा, वैसे भी 0 आवर की कार्रवाई रिकॉर्ड नहीं होती है सर। खैर कोई बात नहीं, ऊपर चलता है। हाँ स्क्रॉल करिए ऊपर चलिए रास्ते में छोड़ो। To Giraj Singh from Supriya Sule, this question. Yes, sir. Giraj Singh ji. जी सर। शांडिल्य गिरिराज सिंह। जी सर। तो देखिए सुप्रिया मैम, जब आपके साथ होता है कि क्या सर आप किसी भी समुदाय पर ऐसे वाक्य कहना शोभा देता है, आपको ये लग क्यों रहा है कि ये वाक्य कटाक्ष है, ये वाक्य से हम उस समुदाय की बेइज्जती करने का प्रयास करते हैं? हम तो बोल रहे हैं उनके भले के लिए, हमने तो बोला एक दिन छुट्टी मिल रहा है भले की बात है, तो इसमें बुरा क्या है उनके लिए? छुट्टी मिल रही है अच्छी बात है, घर पे रहेंगे, जो करना है वो करेंगे। तो आपको क्यों लग रहा है कि हमने जब ये बोला है तो हम उनके ऊपर कटाक्ष रच रहे हैं, हम उनकी बेइज्जती करने की प्रयास कर रहे हैं? हमने बोला देश में सब कुछ शनिवार ये रविवार को मिल रहा है, किसी को शुक्रवार को मिल रहा है, सबके लिए अच्छी बात है, तो आपको क्यों लगता है कि हमने कुछ ऐसा कहा? आप मैनिपुलेट क्यों कर रहे हैं हमारे साथ? काउंटर इज देयर एनी काउंटर सुप्रिया जी? सर आप अपने स्टेटमेंट को वापस पढ़िए, आपको समझेगा कि आप किस तरीके से इनडायरेक्टली टारगेट करना चाह रहे हैं मुसलमानों को। सर मैम फिर तो मेरे स्टेटमेंट्स को आप पढ़ करके रुक जाइए, ये उपेंद्र जी मेरे स्टेटमेंट्स को आप सुन रही हैं, आखिरी लाइन पढ़िए, आपकी खुद की स्टेटमेंट है सर कि आप कोड लागू करने का प्रयास लगता है। क्यों लगता है सर? लग रहा है आपने लेवी कर दिया, उसके बाद आपको ये बोलने की जरूरत ही नहीं थी, आपका बोलना बनता ही नहीं है सर। मैंने मेरा बोलना क्यों नहीं बनता? सुनिए, मैं इस भूपेंद्र यादव साहब को विरोध दर्ज कराएंगे क्या? मैं इस देश का नागरिक हूँ, मेरे पास संवैधानिक अधिकार है। सर अगर आप एग्री कर रहे हैं उसके बाद आप एडिशनल डायलॉग्स क्यों ऐड कर रहे हैं? अरे मैं इस देश का नागरिक हूँ, मैं एडिशनल 6000 डायलॉग ऐड करूंगा, आप कौन होती है मुझे रोकने? सर आप लीडर हैं, आप लोगों को लीड कर रहे हैं, आप कम्युनिटी के लिए ऐसी कोई चीज नहीं बोल सकते। मैं लीडर हूँ सर, मैम मैं ये लीडर हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ, डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं कम्युनिटी। मैंने कब डिस्क्रिमिनेट किया? मैंने तो बोला उनकी अच्छी बात है, अच्छी बात डिस्क्रिमिनेशन है, वो आपके हिसाब से डेरोगेटरी है, वो आपके हिसाब से डेरोगेटरी है। आप विपक्ष में बैठी हैं, आप बोलेंगे तो आपके लिए डेरोगेटरी हो जाएगा। और आप क्लैरिफाई कर रही है अपने स्टेटमेंट को। मैंने तो क्लैरिफाई किया, क्लैरिफिकेशन आपको सुनना नहीं है, मैं कल की बात रिपीट करूंगा। सोने वाले को जगाएंगे, जो नाटक कर रहे हैं उसको कैसे जगाएंगे? आप मानने को तैयार नहीं है तो हम आपको कैसे मनाएंगे? आप तो मान के बैठे कि मैं कुछ भी कर रहा हूँ, आप मानने को तैयार नहीं, तो हम भी प्रयास नहीं करेंगे। हमने बोला कि उनके लिए अच्छा है, उनका कोड आएगा, वो मजे करके शनिवार वाले अपनी। अरे गुरुदेव बस करिए। फारूक अब्दुल्ला साहब, आंसर दिस क्वेश्चन फ्रॉम गिरिराज सिंह। यस सर, ऑब्वियसली सर। अभी गिरिराज सिंह सर कह रहे थे कि मैं 6 डायलॉग बोलूं या 6000 बयान दर्ज कराऊं, कोई दिक्कत नहीं सर। संविधान में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 19 अगर आपने पढ़ा होगा तो फ्रीडम ऑफ स्पीच है। हमारी घाटी में, हमारी पहाड़ों में, हमारे कौम को, हमारे लोगों को आप बरगला रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, तंग कर रहे हैं 370 हटा करके।
कितना ज्यादा दिक्कत हो रहा है। आप उद्योगपतियों को बुला बुला करके जमीन बेचे जा रहे हैं, खुद से कुछ लगाए जा रहे हैं। घाटी की शांति को तो भंग कर दिया सर आपने। और बात फारूक अब्दुल्ला साहब, आपकी पार्टी ने भूपेंद्र जी रुक जाइए, भूपेंद्र जी रुक जाइए। अरे सर एक तो सुन लीजिए सर, सुनने की क्षमता रखिए। आर्टिकल 19 हटा दीजिए ना, फिर फ्रीडम ऑफ स्पीच ही हटा दीजिए। आपकी सरकार है, घाटी शांत हो जाएगी। 370 लगाइए, 465 लगाइए। कश्मीरी पंडितों को मार के भूपेंद्र जी आप रुक जाइए, भूपेंद्र जी आप रुक जाइए। आपने बोला आपने आर्टिकल 19 के थ्रू आप बोलेंगे। आर्टिकल 19 के रिस्ट्रिक्शन में ये भी कहता है कि आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते कि जिसमें सेडिशन हो जाए या देश की आप इंटेग्रिटी के अगेंस्ट। अरे सर मैंने कौन सी आपका स्टेटमेंट इंटेग्रिटी आप इतना आप तो बोल रहे हैं कि सरकार लाइक राज्य करने के चाइनीज वालों का राज्य करना चाहिए। देश के आवाम की रक्षा और उनकी खुशी की ही नहीं सोच रहे हैं। कौन सा कश्मीरी खुश है घाटी में? कौन सा हमारे आवाम, कौन सी आवाम खुश है? बता दीजिए, एक इंसान से जाके पूछिए, बताइए कि वो खुश है। अगर खुश है तो मैं अपने बयान को वापस लूंगा और पूरा जम्मू फारूक अब्दुल्ला साहब, घाटी की आवाम कौन है सर? फारूक अब्दुल्ला साहब, घाटी की आवाम, घाटी की आवाम जम्मू खुश है, पूरा पंडित नहीं आते क्या साहब? खुश है सर, समझ में फारूक अब्दुल्ला साहब की पार्टी ने ही कश्मीरी पंडितों को भगाया था। सर डालिए जेल में। आप ऐसे कैसे कर सकते हैं? This amounts to sedition. Article 120। हमारे जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आते हैं लद्दाख की व्यवस्था बनाए रखिए, कृपया शांति व्यवस्था बनाए रखिए। हाँ निर्मला सीतारामन जी, कौन सा पॉइंट ऑफ ऑर्डर है आपको? सर उन्होंने बोला कि हम कश्मीर में उद्योगों को लैंड बेच रहे। सर अभी तक ऐसा कुछ भी हमने नहीं किया है सर। बहुत सर रिकॉर्ड में आने देंगे आप तो। अरे एक मिनट रुको तो सही सर। मैंने आपको बिना रिकॉर्ड की इन्फॉर्मेशन कौन सप्लाई कर रहा है, वो सोर्स बता दीजिए, हमें भी जरूरत है। सर हमारी घाटी है, हमें ही नहीं पता होगा। अरे अरे सर यही बता तो दीजिए कौन रिकॉर्ड हटाइए, कागज तो दिखाइए। हमें भी चाहिए, जो चाहेंगे वो करें। यही जाति मानसिकता की प्रॉब्लम है विपक्ष की। एनसीपी, कांग्रेस, जेके, इन लोगों ने हमेशा ही घाटी को अपने परिवार का हिस्सा माना है। जोड़ रहे हैं आप पहले जागीर मानी है। हो गया। अरे नहीं पूरे विपक्ष को नहीं जोड़ा सर। मुफ्ती को छोड़ के अरे 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 हाँ विपक्ष की बात नहीं है। ठीक है। हाँ कोई बात नहीं, अच्छा सवाल था, बेहतरीन डिस्कशन था, बहुत अच्छे। निर्मला सीतारमण जी, 0 आर्म पे मैंने कहा था रिकॉर्ड पे कुछ जाता ही नहीं है। तो जब कुछ रिकॉर्ड नहीं होना तो पॉइंट ऑफ ऑर्डर किस चीज पे होगा? ठीक है, खैर कोई बात नहीं, लेट्स मूव अहेड। स्क्रॉल करिए भाई साहब ऊपर। सवाल खत्म हो गए? फिर काफी है, अभी 5-6 बाकी है। हाँ स्क्रॉल करो ऊपर करो जल्दी से। या महुआ मोहित्रा वाला सवाल। महुआ मोहित्रा फ्रॉम सुप्रिया सूले। महुआ जी। यस सर। फर्स्ट ऑफ ऑल सुप्रिया जी, मैंने पहले भी कहा है कि मैं खुद भी एक हिंदू हूँ और मैं खुद देवी काली की पूजा करती हूँ। तो हर किसी को अपने तरीके से भगवान को विजुअलाइज करने का राइट है, और इसमें मुझे नहीं लगता किसी भी हिंदू सेंटिमेंट को हर्ट होना चाहिए। तरह का दुर्गा पूजा में सब मांस भी खाते हैं, मछली भी खाते हैं। वहीं पे नॉर्थ में काली जी को विस्की भी शाम को चढ़ाई जाती है। इसका मतलब उनका तरीका गलत है। क्या बात कर रही हैं आप? शेम ऑन महुआ मोहित्रा एनटीएमसी। वो वेस्ट बंगाल में खाने का पदार्थ होता है, उसकी सर भगवान को चढ़ाया जाता है। आप भगवान को चढ़ाया जाता है। आपको ठेस पहुंचा रही है। आप हिंदुओं से माफी मांगी है। आपने हमारे सेंटिमेंट्स हर्ट किए मैडम। इंटरनेशनल
इंटरनेशनली हमारे माफी मांगो। महुआ मोहित्रा माफी मांगो। माफी मांगो। मैं माफी नहीं मांगूंगी। मैंने किसी भी तरह से हिंदू सेंटिमेंट पूरे बंगाल की ममता बनर्जी आपने पूरे बंगाल के हिंदुओं के साथ खिलवाड़ किया है। पूरे बंगाल सुधीर बंदोपाध्याय आप ये साबित करती हैं कि केवल बाहर से पढ़ के आना नहीं होता। माफी मंगाई थी आपने नुपुर शर्मा से स्पीकर महोदय, किसने मांगा? सर आप मैडम आप नुपुर शर्मा के पीछे पड़ गई थी जबकि वो एविडेंट था। हमारे किसी भी हिंदू स्क्रिप्चर में ये सब लिखा नहीं है। मैडम ये आपने जो किया ये क्या बोल रहे हैं? उनकी पार्टी खुद आपने जो हिंदू विरोधी है। आपने सारे स्पीकर महोदय, माफी मांगी आप। सदन से माफी मांगो। आपको सस्पेंड करेगी टीएमसी? अरे इनकी पार्टी में खुद ऐसे किनारे करना चाहिए। इनकी पार्टी में हर तरह चाहिए। फारूक के वोटर्स को पता है आप उनके विरोध करते हैं और उनसे अनकंडीशनल अपोलॉजी की मांग करते हैं। बहुत अच्छे सर, थैंक यू सो मच। काइंडली स्क्रॉल अप प्लीज, स्क्रॉल अप करिए। हाँ भाई साहब बोले। सर मैं भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की तरफ से महुआ मोहित्रा जी से मांग करता हूँ कि वो बिना शर्त के सदन से और देश से माफी मांगे। उन्होंने एक हिंदू धर्म का भावनाओं को ठेस पहुंचाया। पहले भी कहा, मैं अभी भी माफी मांगो। सबकी बात के हिसाब से आप खुद नहीं चलेंगे। आपकी और आपकी पार्टी की मानसिकता दिखाती है कि आप बंगाल में कर क्या रहे हैं। आपने बंगाल की आत्मा को ठेस पहुंचाया है। भारत की संविधान की आत्मा को आपने ठेस पहुंचाया। आपको माफी मांगनी चाहिए। काली माँ वैसे चलेगी। काली माँ 80 करोड़ हिंदुओं को भी उतना ही हक है अपनी भावनाओं को ठेस पहुंचाने बताने का जितना आपको है। अगर आपने कुछ बोला है दैट डज नॉट ट्रम्प द फैक्ट कि 80 करोड़ हिंदुओं को राइट। सुनो महुआ मोहित्रा माफी मांगो। माफी मांगो। कृपया सदन की गरिमा बनाए रखिए। बहुत धन्यवाद। हाँ, so with this we come to the end of 0 hour. I believe you people are expected to have a press conference now. Yes sir. प्रेस वाले कहाँ पर हैं? मौजूद? Are the press people here? No, the press conference is not going to happen for some time. I'll just call Bianca here. Okay. हाँ तो यार वो बियंका से पूछ लो, फीडबैक वगैरह लेना हो तो ले लो। माननीय अध्यक्ष महोदय। हाँ भाई साहब। सर मैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और एनडीए की तरफ से सदन से आपसे मांग करता हूं कि महुआ मोहित्रा जी के स्टेटमेंट को सदन की कार्रवाई से हटा दिया जाए। इससे हिंदू भावनाओं को बहुत ठेस पहुंची है। सर प्लीज इससे सदन की कार्रवाई से हटा दिया जाए। सबकी बातें ही हटा देंगे, संसद पूरा हटा देंगे। आप यही काम करते हैं, सब हटा देंगे आप। कम कर दीजिए। अरे ए राजा साहब आप तो कुछ मत बोलिए। क्यों नहीं बोलेंगे? आप बोलने देंगे। कुछ मत बोलिए इन मामलों में। ऐसे थोड़ी इज्जत हो रहा वही बहुत है। नहीं आपको कोई अरे पूछेगा। आपकी पार्टी की मेंटालिटी दिखती है।
आप लोगों को माननीय लगता है अध्यक्ष पावर महोदय। में तो जो चाहे वो कर लेंगे? हाँ जी हाँ जी। सर पार्टी पावर में वेस्ट बंगाल में है, यहाँ पे थोड़ी है, यहाँ पे तो आप लोग है ना। आपकी पार्टी का पावर भी तो दिख रहा है, सबको चुप करवा रहे हैं तो आप तो वेस्ट बंगाल की आज ये स्थिति है। आप क्या पॉलिटिक्स करना जानते हैं? अपोलोजाइज करने को आप तैयार है, तो आपने शिफ्ट इतने करा सारे रहे हैं। एमपीज के अपने रिलीजियस सेंटिमेंट्स हर्ट किया, अपने अपोलोजाइज करने को तैयार आप चाहते हैं नहीं। ये आपके पार्टी का बल नहीं तो और क्या है? ताल से ताल मिलाएगा, सिर्फ वही चल पाएगा। मैं सबसे ऐसा अपील नहीं होने करता हूँ, वाला है। कृपया इस आपने हमारे पार्टी के ऑफिस को अटैक करवाया, अरे हमारे एक पार्टी सेकंड, वर्कर्स को एक बताया आपने इलेक्शंस के बाद। ये क्या है? लड़के लिया पाकिस्तान अक्सर लेंगे हिंदुस्तान और कोई बीच में नहीं आएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन। आई बिलीव Bianca is here. Madam President, you are most welcome in the committee. I take your leave. I believe you people will have a feedback session followed by a press conference, right? Yes, Vedansh. Perfect. Thank you. Then I'll be taking your leave. Kindly let me know when we are expected to join back. Bye-bye. Sure. Thank you. Requesting the organizing committee members, the executive board members, and the press members to please move to the breakout room. Daksha, you can stop recording.